हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? डॉक्टर दीक्षा दीक्षा आ गए? अरे वॉइस क्लियर है, कमेंट में बताओ। यस सर, क्लियर। डॉक्टर दीक्षा आ गए क्या? डॉक्टर दीक्षा आ गए क्या? प्रजापति विशाल। बाकी के लोग कमेंट ही नहीं कर रहे। विशाल, बाकी कमेंट ही नहीं कर रहे। हाँ, comment ही नहीं कर रहे। चलिए चलिए, विल स्टार्ट नाउ इन 1 मिनट। इन 1 मिनट। चलो, गुड आफ्टरनून ऑल। चलो, गुड आफ्टरनून ऑल। मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ अरे सबको? मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ अरे सबको? ओके, चलो आ जाएंगे। अब शुरू करेंगे। चलो आ जाएंगे। अब शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून ऑल। इससे ज्यादा वॉइस क्या हो सकता है रे? कितना अच्छा आ रहा है। इससे ज्यादा वॉइस क्या हो सकता है रे? कितना अच्छा आ रहा है। ज्यादा वॉइस क्या हो सकता है रे? कितना अच्छा आ रहा है। चलो विल स्टार्ट। चलो विल स्टार्ट। वॉइस क्लैरिटी है? क्लियर साउंड, वेरी गुड। चलिए। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब आगे बढ़ते हैं। आई वॉज टोल्ड दैट योर हॉल टिकट्स आर रिलीज्ड, तो द एग्जामिनेशन इज ऑन 14th. So the examination is on 14th. Correct? Yes, 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 yes. चलो, तो what I am planning is I have around 120 questions. तो it includes all subjects, सारे subjects के. It is something like your mock test, 14th August. तो I'll try my level best to complete these questions. It all depends on you. मैं तो ready आया सर. Just now I completed 2 classes. एक HMT का हीट ट्रांसफर का, देन आई टुक एप्टीट्यूड क्लास. सो स्ट्रेट अवे आ गया सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम. ठीक है, अभी स्टार्ट करें सर? यस. सो वी हैव अराउंड 120 क्वेश्चंस. विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस. अगर पेशेंस है तो करेंगे, नहीं तो दुकान बंद कर देंगे. ठीक है सर जी, चलो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. पढ़ो एक बार. इफ द रिजल्ट, आई हैव टेकन क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस लिए सर. ठीक है, बहुत बढ़िया. दिख रहा है सर स्क्रीन पे क्वेश्चन सही दिख रहा है? इसको ऐसा रखूंगा सर मैं. ओके, दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है सर, वेरी गुड. इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q acting at an angle makes an angle alpha with force P. देखो,
you know there are two forces, P and Q, and the angle between them is alpha. Is it correct? The resultant of two forces are acting at an angle theta. It is the angle between this is theta, correct now? The resultant is making an angle alpha with the force P. Okay, let this be P, let this be Q. So now these two sides can be represented by the पैरेललोग्राम. ठीक है सर. तो ये Q है सर, ये P है, ये भी P है सर. And he said the resultant is making an angle. This resultant R is making an alpha with what? Force P. Force P के साथ it is making an angle alpha. तो he is asking what is the relationship. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर. देखो आराम से, टेंशन नहीं लेने का. दिस इज Q. तो कैन आई राइट दिस एज माय डियर स्टूडेंट्स, एंड यू नो दिस टोटल एंगल इज थीटा, सो ये भी थीटा हो जाएगा सर. दिस लेंथ विल बी Q sin theta and this length will be Q opposite is sin, this is Q cos theta, and already you know this length is P. ठीक है सर. तो now you take this big triangle. प्यारे बंधुओं, दीनबंधु दुःखहर्ता, let us take this big triangle. ये वाला ट्रायंगल ले लो. तो व्हाट विल बी आवर tan, प्यारे बच्चों, व्हाट विल बी आवर tan अल्फा? tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट, दैट इज q sin theta by adjacent, that is p plus q cos theta. So what is the answer, sir? Tan alpha is q sin theta by p plus q. So is it C? Is it C, बच्चों? बच्चों कमेंट्स नहीं दिख रहे. Is it C? मैकेनिक्स सिलेबस में नहीं है. बीएल में 4 मार्क्स रह गए. तो मैं एक काम करता हूं सर. क्या दिक्कत है फिर? क्या दिक्कत है सर? काहे टेंशन ले लेते हैं सर? ये है ना, ये है. HPCl. अब बताओ ये है? नहीं है? है? यस. Hooke's law is valid up to what point Hooke's law is valid? बोलो सर. प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही वैलिड है सर. ओनली अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो द आंसर इज बी. ऑप्शन इज बी. इज इट ओके? यस. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर स्टील. बहुत बढ़िया सर. एनीवन विद आंसर? स्टील के लिए जनरली क्या वैल्यू वेरी होता है सर? एनीवन? फटाफट. एनीवन? एनीवन? डॉक्टर दीक्षा इज गिविंग वंडरफुल. वॉइस लो आ रहा है. अरे मेरा वॉइस तो सही है सर. एक सेकंड, वॉइस लो आ रहा है. नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है. आप अपना डिवाइस का बढ़ाओ सर. नो सही है सर. इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ वॉइस? नो. सो एक्चुअली जनरली इट इज 1/4 to 1/3 है सर. सो देयरफॉर अराउंड बी. इज इट ओके सर? इज द वॉइस क्लियर? क्लियर. वेरी गुड. ये वाला देखो. हाँ, प्लीज आंसर टू दिस क्वेश्चन. फटाफट आंसर कीजिए. मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट. If the material expands freely due to heating, it will develop. Whenever it is free to expand or contract, so there is no constraint or restriction, the stress developed will be zero. But the same question can also be asked in this fashion. The same question can also be asked in this fashion. When a material is free to expand, the thermal stress developed will depend on A, coefficient of thermal expansion, B, temperature difference, C, Young's modulus, D, none. So whenever it is free to expand, it is not, there are no stresses developed. Is it okay, sir? Is it okay? बोलो रे. हाँ जी सर. ये करो. हाँ करो, देखते हैं सर. फटाफट फटाफट. डोंट वेस्ट टाइम. आज रिकॉर्ड कर लेंगे सर. आज रिकॉर्ड कर लेंगे हम जल्दी कंप्लीट करके. ओके सर. ओके सर. हाँ
देखो, independent word is very important. फोर इलास्टिक कांस्टेंट्स है, ठीक है सर. Independently for a homogeneous isotropic material, how many are required? Only two are enough. For example, if two are given, for example, E is equal to 2g into 1 plus nu, my dear loving students, and E is equal to 3k into 1 minus 2 nu. If I give any two values, third can be found. If I give any two values, third can be found. So only two are enough. The answer is D. और एक बात बता रहा हूं सर, डू नॉट बी इन हरी टू आंसर. आई वॉन्ट करेक्ट आंसर. यू मे बी टेकिंग सम टाइम, बट एक काम करो सर, आप थोड़ा टाइम लेके आंसर दे दो. ठीक है सर जी, हाँ जी, हाँ, बोलो फटाफट, नो झंझट, फटाफट. Dash is the capacity of the metal to absorb energy when it is elastically deformed, and then upon unloading this energy recovered. क्या एनर्जी बोलते हैं सर इसको? अब देखो एक सेकंड थोड़ा, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. So this is the rupture point. Up to this elastic में, this energy we call it as what? Resilience. Actually maximum point तक लेते हैं तो proof resilience होगा, ठीक है सर. And up to breaking point क्या होगा सर? Up to breaking point it is what? Toughness. ये पूरा है तो toughness. He is not asking up to breaking point. He is asking up to elastic point. So therefore the answer is what? Resilience. Is it okay प्यारे बच्चों? Is it okay sir? Okay sir, okay sir. ये वाला ले लो. Now take this question. 16th. कितने सेशंस होंगे? मेरे पास टाइम ही कहां बचा है, तो जितना टाइम मिलेगा उतना आज पूरा खत्म ही कर देंगे. एनीवन? देखो, मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो का मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ modulus of elasticity. It is the ratio of modulus of elasticity of two metals. इसको बोलते हैं modular ratio. So answer is what? C. Is it okay sir जी? Okay sir? Okay sir. हाँ जी, ये वाला ले लो. Come on. The maximum shear stress in Morse circle is, फटाफट आंसर, फटाफट आंसर, फटाफट आंसर. And you know my dear students, suppose Morse circle के लिए on y axis it is shear stress, x axis it is normal stress, and suppose this is the Morse circle and this maximum shear stress, this is the maximum shear stress which is nothing but radius of the circle. क्या आप बता सकते सर what is the maximum shear stress? It is radius of Morse circle, radius of Morse circle. And you know the Morse circle is given by, what is the radius sir? Under root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. याद रख लेना सर. Don't think that the same question will come ना. इसके देखो आसपास इसके extension भी हो सकता है सर. कैसा? He may be giving you some values of sigma x, sigma y, tau xy. He may be asking you the maximum shear stress or radius. I don't think that only this question is coming ना. चलो कोई बात नहीं, ये करो फटाफट, फटाफट कंप्लीट करो, कंप्लीट करो सर. The moment diagram of a cantilever beam whose free end is subjected to a bending moment. देखो, this is the cantilever. मतलब he is asking bending moment diagram. Cantilever subjected to a moment. Actually, he should have given concentrated moment. What is the answer, sir? What is the answer, sir? आप जानते हैं, sir. He is asking bending moment. So everywhere the bending moment is what? Same exactly. तो क्या आंसर हो सकता है सर? मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है सर? Suppose this is the baseline. So everywhere the bending moment is m. अगर यहाँ पे clockwise है तो resisting will be anti-clockwise. So therefore, so the moment is m. The same moment is continued. ये clockwise है और ये anti-clockwise है, तो clockwise ऊपर गया तो anti-clockwise नीचे. So therefore it is rectangle. Rectangle. Suppose the same question is asked with a, देखो, if the same question is asked cantilever with a point load, what will be your answer, sir?
What will be your answer, sir? Same question अगर point load बोलता है. इतना टाइम क्यों ले रहे हैं सर? दिस इज नॉट फेयर सर. दिस इज नॉट फेयर सर. इतना टाइम क्यों ले रहे हैं सर आप? इट विल बी अ ट्रायंगल सर. इट विल बी ट्रायंगल बिकॉज देखो कैसा, अगर लोड W है, if this is the distance x, it will be Wx. So when x is 0, the bending moment is 0. So therefore, and at L it will be WL, and linearly it is varying bending moment. तो यहाँ पे 0 है, तो it is a triangle. It is a triangle. It's a straight line. Is it okay, sir? Very good. Very good. ये वाला ले लो. ये बताओ सर आंसर. ये बताओ सर आंसर. Come on, don't waste time. Someone said B. Whenever there is a sudden increase or decrease in the shear force diagram, it is not bending moment diagram, shear force diagram. Either it is suddenly rising or falling. What is an indication? It is an indication of point load. Whenever on the load diagram there is a point load, the shear force diagram either suddenly rises or falls depending on whether the load is upwards or downwards. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सर सभी को? Yes, it is an indication of point load at 2 points. Very good, sir. Very good, very good. समझ में आया सर? Very good. Excellent students of India. ये करो, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे. हो गया, आप ज्यादा दिन नहीं रहेंगे अब. आपका काम हो गया सर. The angle of twist of a solid shaft of torsional rigidity GJ. So what is flexural rigidity? EI. What is axial rigidity? देखो, axial rigidity is AE, torsional rigidity is GJ, flexural rigidity is EI. ठीक है sir. What is this saying? You know very well from the theory of torsion, T by J is equal to G theta by L is equal to tau by R. Very good, sirs. So, bolo, sirs. What is he asking? Angle of twist. So, let us take these two equations. So, T by J is equal to G theta by L. So, if you want theta, it will be TL by GJ. Where is that? TL by GJ. Yes, it is very simple question. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये करो. Come on, come on. Dr. Diksha says something. The longitude thin cylinder, the longitudinal stress is given by PD by 4T, and the circumferential or hoop stress is given by PD by 2T. And if you see here, the longitudinal stress is half of PD by 2T. So this will be the longitudinal stress is given by, मेरे प्यारे बच्चों, the longitudinal stress is given by half of, what is PD by 2T? It is sigma C. So circumferential का आधा longitudinal होता है. So half. Anyone, is B correct? Now I'll ask you one question. ये आंसर दीजिए सर. There is a pipe. Through this pipe, water is flowing at some pressure. What type? A thin cylinder. In a thin pipe, water is flowing. So what are the stresses developed? Anyone? What will be the longitudinal stress in this? What will be the longitudinal stress in this? I said longitudinal stress. ध्यान से सुनो. Longitudinal stresses will be developed only when you close both the ends. When you close both the ends, then the fluid will exert a pressure so as to stretch this. So please understand carefully. Confuse करने के लिए बोलेगा, a fluid is flowing through this pipe. The pressure of the fluid will be given, and the diameter of the cylinder will be given. The thickness of the pipe will be given, and he will ask what are the circumferential and hoop stress. तो आप बोलेंगे, for example, if PD by 2T is, सुनो carefully, let us say we got the value as 20. मान लो the circumferential and hoop stresses are 20 and 10, B 20 and 20, C 10 and 20, D. The circumferential and longitudinal stresses,
The circumferential and longitudinal are respectively 20 and 0. What will be your answer, sir? What will be your answer, sir? Yes, there is no long. Be careful, sir, क्योंकि आदत हो गया है पीडी बाई 20 पीडी बाई 40 पीडी बाई 20 पीडी बाई 40 कुछ भी नहीं सोचना नहीं कुछ नहीं पीडी बाई 40 circumferential stress तो आएगा because the fluid is inside the pipe, so therefore internally it tries to increase the diameter. Circumferential stress will be there, but longitudinal stress will be there only when both ends are closed. बहुत बढ़िया सर जी, आइए बोलो, ये बोलो। ये बोलो। In designing a connecting rod, it is considered like dash, both end fixed, both ends hinged, one end fixed, for buckling about x-axis. And you know very well, ये बहुत important है. Actually, connecting rod, देखो एक बार. Let us visualize. This is a crank, and this is the connecting rod. ठीक है. ये देखो यहां पे पिन जॉइंट है, यहां पे पिन जॉइंट है, तो हाउ डू यू assume this connecting rod? So it is hinged, pinned. So if the load is coming like this maybe, तो यहाँ पे इसका एक component ऐसा आएगा, so it may buckle. So how to treat this connecting rod? Both ends as hinged. ये बहुत important है sir. Is it okay? So यहाँ पे भी पिन जॉइंट है, यहाँ पे भी पिन जॉइंट है, so therefore both ends are hinged or pinned. So what will be the buckling load, sir? Euler's buckling load for both ends pinned? I think it is pi square EI by L square. याद है किसी को? बिल्कुल है सर, पूछ सकता है ये सवाल. हाँ जी सर, ये करो, ये करो, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए डॉक्टर दिव्या. If the length of the column is halved, अभी तो दिया सर, the critical load is given by pi square EI by L square. You know, the critical load is inversely proportional to square of the length. I repeat. So can we write this as PC1 by, okay, PC2 by PC1 is equal to उल्टा. It is उल्टा. अगर 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा सर, उल्टा. अगर 1 है तो L1 square. ठीक है सर जी. So PC2 by PC1 is equal to L1 square by, what is the length now? The length is halved. So L2 will be L1 by 2 का whole square. Length is halved. तो PC2 by PC1 is equal to, ये 2 square, ये 4 ऊपर जाएगा. So therefore PC2 is equal to 4 times PC1. So it becomes 4 times. Is it okay, sir? Anyone got this answer? किसी को आंसर आई? वेरी गुड. अरे कितने पोस्ट है रे? SJVNL में कितने पोस्ट है सर? हाउ मेनी टोटल पोस्ट आर देयर? बच्चों कितने कितने पोस्ट है? 11. ओ माय गॉड, 122. क्या हो रहा है रे? एक बोलता है 15, एक बोलता है 11, एक बोलता है 122 बोलता है. कितने पोस्ट है सर? डिडंट अप्लाई. अच्छा, कितने पोस्ट है बोले तो आंसर सी बोलता है. मैं एक पूछता है, एक बोलता है. कहां से आते हैं, कौन आते हैं? 30 फॉर सिविल, 15. अच्छा, 15 मैकेनिकल. ठीक है सर जी. हाँ जी, ये बोलो. The strain energy corresponding to the stress at the corresponding to the stress as the at the elastic limit.
आंसर दीजिए सर, गुड क्वेश्चन। आई एम चेकिंग आंसर्स, बच्चे दे रहे हैं लेकिन पूरा नहीं दे रहे। देखो, लुक एट केयरफुली, लेट दिस बी द इलास्टिक लिमिट। देखो, he is asking this energy corresponding to stress at elastic limit. ठीक है sir, I'll ask you some questions, please answer. Okay, is this corresponding to elastic limit? No, this is your resilience, this is your resilience. ये भी resilience है सर, ये भी resilience है, but this is the maximum resilience, क्योंकि corresponding to elastic limit, corresponding to elastic limit, it is the maximum resilience. This is the maximum resilience. That maximum resilience we call it as what? Proof resilience. समझ में आ रहा है सर सभी को? So he is asking corresponding to the stress at elastic limit. So he is asking at the maximum limit, maximum limit. So corresponding to elastic limit, that is nothing but your proof resilience, sir. He is asking corresponding to elastic limit. Is it okay? Is it okay, sir ji? ये ध्यान से सुनो सर, दिस इज ऑल्सो रेजिलियंस, मैक्सिमम रेजिलियंस को हम क्या बोलेंगे? ही इज आस्किंग करस्पॉन्डिंग टू द इलास्टिक लिमिट, दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी अप टू द इलास्टिक लिमिट, दैट मैक्सिमम एनर्जी अब्सॉर्ब अप टू द इलास्टिक लिमिट, वी कॉल इट एज प्रूफ रेजिलियंस। रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस इज ऑल्सो रेजिलियंस, बट इट इज अप टू मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू कमिटिंग मिस्टेक्स। बहुत बढ़िया, ये करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, कम ऑन। A what is the maximum deflection in a cantilever beam carrying uniformly distributed load? W per unit length. Anyone? आंसर दीजिए सर। अच्छा, ऑप्शन ए एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, resilience per unit volume is known as modulus of resilience. Strain energy per unit volume, वो क्या पूछ रहा है? Strain energy पूछा है सर। Strain energy is nothing but he is asking resilience. Suppose he asks strain energy per unit volume, it is known as modulus of resilience. समझ में आया सर? ठीक है, चलो। हाँ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, एंड प्लीज रेडीमेड याद रख लेना सर, डिफ्लेक्शंस फॉर एग्जांपल। तो इसका क्या होगा सर? सो व्हेनेवर अ कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, द एंड डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इज गिवन बाय, सो कितना होगा सर? दिस इज फ्री एंड, WL power 4 by 8 EI. Suppose we have a cantilever with a point load, what will be the deflection sir? WL cube by 3A. I think it is WL cube by 3A. मैं भूल गया सर सब, अब बताओ सर। Now you tell me. There is a simply supported beam. Now you tell me what is the deflection of this? इसका आंसर क्या है? Make it fast, make it fast, don't waste time. Yes, it is WL cube by 48 EI. Absolutely fine. इसका आंसर बताओ। Anyone? Anyone? What is this? I think it is pi WL power 4 by 384 EI. ये याद रख लेना सर, these are the most important. ठीक है? Yes, C वाला, exactly, exactly. Very good, very good, very good. हाँ, ये बताओ। ये वाला बताओ। Come on, come on, come on. Which of the following is applicable for brittle materials? Which theory is applicable for brittle materials? Anyone? Maximum principal stress theory is applicable for
ब्रिटल मटेरियल्स। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी किसी के लिए भी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट इन अग्रीमेंट विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। And you know very well, shear stress theory and von Mises theory, that is distortion energy theory, they are used for ductile materials. Shear stress theory, that is Guest or Tresca theory, or von Mises theory, they are used for ductile materials. So यहाँ पे brittle के लिए पूछा है तो it is maximum principal stress theory, absolutely fine. ये करो, देखते हैं सर ये क्या है रे। हाँ बोलो, आंसर बोलो। Come on, come on, come on, come on, come on. 1 second please, 1 second, एक मैसेज भेजता हूं मैं। 1 सेकंड, एक मैसेज भेजता हूं, एक कॉल आया। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, पढ़ो ये। चलो, इसका आंसर क्या होगा सर? देखो, एज पर मैक्सिमम shear stress theory of failure, the relationship between yield stress in shear and yield stress in tension, and you know very well, as per maximum shear stress theory, it is given as the yield in tension by 2. I think it is correct. So this will be 0.5 sigma yield. Suppose the same question is asked as per von Mises theory, answer क्या होगा? If the same question is asked as per von Mises theory, answer क्या होगा sir? Anyone? If the same question is asked as per von Mises theory, yes, it will be the yield shear stress is given by sigma yt by root 3. Is it correct, sir? So it will be 0.57 कुछ आ रहा है ना? What is 1 by root 3? I think what is 1 by root 3 sir? 0.577 कुछ आता है? एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, गलत। What is 1 by root 3? 1 divided by root 3, 0.577. Yes, it will be 0.577 sigma yield intention. This is as per von Mises or distortion energy theory. This is distortion energy theory. This is as per Guest or Tresca, or Guest or maximum shear stress theory. ठीक है सर जी। ओके, इसका आंसर होगा इसका, बिकॉज ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोला है, सो ही इज आस्किंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो आंसर इज डी। एम आई राइट सर? द आंसर इज डी। ये करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये क्वेश्चन करो, देखते हैं सर। In a helical spring, C is a spring index. Can you tell the meaning of spring index? Can you give the meaning of spring index? It is the ratio of mean coil diameter to the wire diameter. Am I right, sir? मैं भूल गया सर, एक बार याद दिला देना। Am I right? Yes, you are right. You are right. इधर देखो, the shear stress correction factor is given by, you know very well, the shear stress correction factor is given by 1 plus 1 by 2c. याद है सर आपको? 1 plus 1 by 2c, 1 plus 1 by 2c. So this can be written as 2c plus 1 by 2c. This is the shear stress correction factor. Am I right, sir? This is the shear stress correction factor. So अगर Wall's factor बोलता है तो 4c minus 1 by 4c minus 4 plus 0.615 by c, ये होगा सर। अगर ये वॉल का बोलता है, वॉल्स फैक्टर बोलता है, तो वॉल्स फैक्टर टेक्स केयर ऑफ कर्वेचर एंड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। इज इट क्लियर? नहीं, क्या क्या टॉपिक्स नहीं है सर एसजेवीएनएल में, एक बार बताओ। व्हाट इज द सिलेबस मेंशन्ड? पहले ये बताओ। समवन स्टेट अवे सेड मैकेनिक्स नहीं है, समवन स्टेट अवे सेड मैकेनिक्स नहीं है, क्योंकि ना व्हेन आई सॉ 2019 के पेपर में तो देखा मैं क्वेश्चन,
सब है, बट ये बच्चे ऐसे कैसे बोलते रहे? वेरी सैड सर, क्योंकि व्हेन आई सॉ 2019 पेपर में क्वेश्चंस तो थे, ऐसे क्यों मिसलीड करते सर? वेरी सैड सर। आप बताओ सर, व्हाट इज द सिलेबस? एनीवन, व्हाट इज द सिलेबस? बोलो, एक बार सिलेबस बताओ सर। मैं जब क्वेश्चंस देख रहा था, मेरे पास दो पेपर्स है उसके, सारे तो है सर। हाँ, तो ये गलत है सर, यू पीपल आर मिसलीडिंग मी। मैं अच्छा पूरा प्रिपेयर करके आया था। किस क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे सर हम? फ्रॉम विच क्वेश्चन वी स्टार्टेड एक्चुअली? आई थिंक वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस। हाँ, ये करो, ये करो, ये करो। उल्टा जाएंगे आप, देखो ये करो। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ सर। Acceleration is given by minus omega square x. Can I say the acceleration is proportional to x, where x is displacement? Yes, acceleration is proportional to displacement in SHM. याद है किसी को? हाँ, ये गलत है। हाँ, ये करो, देखते हैं। ये करो। हाँ, ये देखते हैं सर। Let's see how many of you can answer. The velocity time graph of a body in a straight line passing through origin. The velocity time graph of a body is a straight line. So let us take time velocity. It is a straight line. Okay, passing through origin. If the slope of the graph is m, what do you mean by slope of the graph? I think iska slope kya hai sir? It is passing through origin. Suppose you take v here, suppose you take t here. The slope, what is the slope sir? देखो, can we write, if I apply between dy is v minus 0 by dx t minus 0. This is the slope, and the slope is given as m. Excellent sir. तो v by t is given as m. बहुत बढ़िया। और क्या दिया सर? The slope is given as m. The distance traveled by the body in a time t is given by, and you know very well. बोलो सर, क्या ये सही है सर? Is it correct or wrong सर? नहीं आ रहा है सर आपको समझ में? कसम से बोलो, आ रहा है? हम्म। अरे यार, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन से जब पास हो रहा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड द स्लोप इज गिवन एज v by t एज m। यहां तक तो करेक्ट है। सिलेबस व्हाट्सअप किया है, ठीक है। एक सेकंड, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ऑलरेडी आई हैव सीन प्रीवियस पेपर्स, उसमें सारे थे। हाँ, फ्लूइड मशीन स्ट्रीम, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स, गियर्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है। यस यस यस, कोई बात नहीं सर, अब सब देखेंगे, विल डू इट ऑल, सारे करेंगे सर। थोड़ा थर्मल का वेटेज ज्यादा है क्या? हाँ, मैकेनिक्स ऐसे सेपरेट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक काम करेंगे सर, मैं आई विल डू वन थिंग सर, मेरे प्यारे बच्चों, अभी आ रहा हूं सर। आई विल डू वन थिंग, सारे कर देंगे सर। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हीट ट्रांसफर, ओ माय गॉड, सारे है सर, पूरे है। यस यस यस, पूरे है। थर्मल ज्यादा है, तो ऐसा करेंगे सर, एक काम करते हैं सर, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। कितने क्वेश्चंस किए सर हम? डोंट वरी एट ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, आपको डरना मना है, आपको डरना मना है।
तो अभी क्या करना है, अभी मैं बताएगा, अभी बताएगा। यस 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 यस, सब है, आप बोलो। चलो, आर यू रेडी? अरे यार कुछ लेट दिख रहा है आपको। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की तरफ ही आएंगे। हाँ, थोड़ा फास्ट जाएंगे सर, विल मूव इन अ बिट फास्ट मैनर। सो व्हाट डज एनटीयू इंडिकेट? यू नो दैट एनटीयू इज इक्वल टू यूए बाई सी मिनिमम। व्हाट इज यू? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो एरिया, तो एनटीयू इज रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर, इट रिप्रेजेंट साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं सर ताकि आपका समय सेव करने के लिए। ठीक है, ये करो। For evaporators and condensers, for the given condition, the logarithmic mean temperature for parallel flow is, ये बोल रहा है evaporator and condenser. Can you tell me what is evaporator and condenser? They are phase change heat exchangers. Phase change heat exchangers. And I have derived very clearly in my classes. For phase change heat exchangers, the LMTD for parallel and counter flow will be what? It will be same, it will be same. Okay sir, okay sir, बोलो एक बार सब लोग, okay sir, okay sir। अभी थोड़ा फास्ट जाता हूं सर मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। In a counter flow heat exchanger, the product of specific heat and mass flow rate, the mass flow rate and product of hot fluid is equal to, is same for hot and cold fluids. What type of heat exchanger is this, sir? Whenever the heat capacities or the product of mass and specific heats for both fluids are same, what is this heat exchanger known as? It is known as a balanced heat exchanger. And for a balanced heat exchanger, the effectiveness is, इसको बोलते हैं balanced heat exchanger. This is balanced heat exchanger. And for balanced heat exchanger, the effectiveness is given by NTU by 1 plus NTU. मैंने derive किया था, and the NTU is equal to 0.5. क्वेश्चन में NTU 0.5 दिया है, so याद रख लेना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It is 0.5 by 1 plus 0.5. Calculator is not allowed, so 0.5 by 1.5, so it will be 5 by 15, it will be 1 by 3. 1 by 3 is 0.33333333। ओके, चलो अब मैं फास्ट जा रहा हूं सर, विल इट बी ओके सर? अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं सर, अब अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स सब आएगा सर, पावर प्लांट, आरएसी सब आएगा। ताली, ओके 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 ओके, आइए करो। LMTD, same question. LMTD in case of counter flow compared to parallel. बोलो आंसर, आंसर बोलो सर। पोल करावे, पोल करावे। हाँ, हे भगवान, आंसर कोई भी नहीं दे रहा है सर, कोई भी नहीं दे रहा है सर, क्या हो रहा है? LMTD in case of counter flow, you know very well, in counter flow heat exchanger, the logarithmic mean temperature difference is greater than the parallel flow. That's why you need smaller area. So इसीलिए they are compact. Okay, it is more, answer is higher. ठीक है सर जी, ये करो। Fouling factor is used, जो फर्स्ट आंसर देते हैं उसको चॉकलेट देते हैं, क्योंकि कल बहुत चॉकलेट्स आए मेरे पास, थोड़े लोगों का चॉकलेट अभी इंतजार में है। कम ऑन कम ऑन, कम ऑन कम ऑन सर, गमा पदनिसा, करो 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 जलसा। फॉलिंग फैक्टर कहां पे यूज करते हैं सर? इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर, so over a long period of usage, scales are formed. When scales are formed, they introduce large thermal resistance and reduce the heat transfer. So they are used in the design of heat exchangers. In heat exchanger design, yes sir, yes sir, is the answer correct? Yes, फटाफट ये बोलो। The automobile radiator is heat exchanger of क्रॉस फ्लो होता है सर, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में क्रॉस फ्लो होता है सर, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में क्रॉस फ्लो होता है सर। बोलो एक बार,
क्रॉस फ्लो बोले, बहुत बढ़िया। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। लार्ज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कंडेंसेशन कैन बी अचीव्ड बाय, याद रखना, देयर इज फिल्म वाइज कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। ध्यान से सुनो, इफ यू टेक फिल्म वाइज कंडेंसेशन, फिल्म वाइज कंडेंसेशन में पूरा सरफेस इज कवर्ड विथ ए फिल्म, and therefore there is no direct heat transfer, that's why heat transfer coefficients are low in film wise। अगर drop wise देखते हैं तो if it is a drop wise, so there is lot of fresh surface exposed, therefore जब lot of fresh surface is exposed, the heat transfer coefficients are higher, तो large heat transfer coefficients are obtained in drop wise condensation। is it okay? बोलो सर जी, बोलो, बोलो सर जी, नहीं आ रहा है? यस, हाँ ये बोलो, आंसर दीजिए सर, कम ऑन आंसर दीजिए, आई विल गिव यू चॉकलेट। The temperature of a solid surface is changed from, what is 127 sir, add 273, add 273 तो कितना होगा सर? 10, is 400 correct sir? Yes, and 927 कितना होगा सर? 273, it is 10, 10 1200। तो you are increasing the temperature by how much sir? कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं सर हम? University of American Competition Economy. Your engineering mathematics classes play a big role in my interview. Thank you, Sayan Dev. God bless you. Somehow I'm useful to you. तो थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। अरे देता है, 5 देता है, 1000 देता है, तेरे को क्या जा रहा है? चलो चलो, ले लो, डी ले लो, खुश हो कि नहीं? अरे यार ये भी नमूना है, 4 ही तो देता है सर, मेरा माफ हुआ, क्या मुझे जेल में डालेगा? वेरी गुड। देखो क्या बोला है सर, द एमिसिव पावर। मेरे प्यारे बच्चों, सर इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा नहीं रे, प्यार से बोल रहा हूं। सयन देव, गॉड ब्लेस यू बेटा, सयन देव। इसीलिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ो बोला। मैं मैथ्स बहुत टाइम लिया, लेकिन बहुत लोगों को फायदा हो रहा है सर। वेरी गुड। द एमिसिव पावर इज गिवन बाय sigma t power 4, or the emissive power is directly proportional to fourth power of temperature, so E2 by E1 is equal to T2 power 4 by T1 power 4। तो E2 by E1 is equal to क्या है रे मेरे प्यारे बच्चों? T2 कितना है सर? It is 1200, and T1 कितना है सर? T1 is 400, so this power 4, this is coming out to be 3, so 3 power 4 कितना होगा? 9 into 9 is 81, तो anyone got the answer as 81? किसी को 81 आया सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कम ऑन कम ऑन। अरे आंसर तो दे दो रे, ओनली दीक्षा इज गिविंग? नहीं, प्रवीण कुलकर्णी इज ऑल्सो गिविंग, डॉक्टर कोमल इज ऑल्सो गिविंग, डॉक्टर दिव्या इज ऑल्सो गिविंग, डॉक्टर खिल दे रहा है, और सयन देव भी दे रहा है। और कौन दे रहा है सर? सयन देव भी दे रहा है, एके ऑफिशियल। ओहो, दी परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या करता है सर? इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब जो देखो ब्लैक बॉडी पे जो भी गिरता है ना, रिफ्लेक्ट जीरो, transmission zero, it absorbs everything, whatever is incident on it, it absorbs everything। And one more thing is there, a black body at a particular temperature, it emits maximum radiation compared to the other surfaces। Okay, so what is the answer? Absorbs heat radiation of all wavelengths falling on it। So किसी को आया सर आंसर? बिल्कुल आया सर। अब ये ले लो, what is gray body? फर्स्ट ऑप्शन इज फनी, कहाँ है? बहुत बढ़िया।
What is a gray body? Gray body is whose radiation properties are independent of wavelength. Whenever radiation properties are independent of wavelength, so therefore is independent of wavelength, that is a gray body. ये मत सोचना gray body is gray in color. Ice is what body, sirs? Ice is snow or ice. Snow or ice is what body? Snow is white in color. So is it a white body? हे भगवान, ये बच्चों को क्या हो रहा है बहन? कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे लाइक मैं पूछा स्नो और आइस इज व्हाट बॉडी? It is almost a black body, sir. Snow is almost a black body because it absorbs all the radiation incident on it. समझ गए? Right. सब भूल गए सर आप. Make it fast. Make it fast. Make it fast. A flat plate of length 1 meter and width 50 centimeter. देखो, there is a plate of length 1 meter and the width is half meter. 50 centimeter is nothing but half. तो ये हो गया आपका width 0.5 मीटर. ठीक है सर. And is placed in a stream of air. Air is flowing at a temperature of 30 degree centigrade. The convective heat transfer coefficient is, यहाँ से कुछ convection हो रहा है. And how much is the convective heat? 30. And the heat transfer, if the plate is maintained at 400, the surface temperature of the plate is 400 degrees centigrade. Simple question. So plate is at higher temperature, surrounding is are at low temperature. So surface से higher से lower क्या होगा? The fluid will come and take it and it goes. It is convection. It is convection. So Q is equal to HA, the surface temperature मतलब minus ambient. So therefore, what is the heat transfer coefficient, sir? The heat transfer coefficient is given as 30. Can you tell me the area? इस एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा है. From this area the heat transfer is taking place. From this area convection is taking place. So 0.5 into 1, 0.5 into 1. And what is the temperature difference? Whenever it is difference in temperature, it doesn't matter whether it is in Kelvin or degree Celsius. So the surface temperature is 400 and the ambient temperature is 30. Is it 30, sir? Ambient is 30. तो कितना आ रहा है सर? ये 5/10. ये 15 आ रहा है सर. ये 5/10 into 370. Am I right, sir? Is it correct? So this will be in what? This will be in what? तो कितना आएगा सर? 15 sevens 135. ये तो जीरो रहेगा. 15 7 135 ना? हाँ 105 105. तो 15 is 45. तो 55 आ रहा है. So many watt. So it is 5.5 kilowatt. I have not used calculator, sir. 5.5 kilowatt. Is it correct? 5.55. Is it correct? गलत मत लेना प्लीज. क्वेश्चंस देखो इजी रहेंगे. सी ऑलवेज रिमेंबर दैट पेपर तो उतना टफ गेट की तरह तो नहीं रहेगा. सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे. बट द ओनली थिंग इज वेदर यू आर रिकलेक्टिंग इट और नॉट. वॉट एवर क्वेश्चन यू आर डूइंग, आर यू डूइंग करेक्टली और नॉट. ये बहुत मैटर करता है सर. दिस मैटर्स अ लॉट. बहुत बढ़िया. ये वाला लीजिए. Come on. Prandtl number. Anyone? Prandtl number is nothing but it is the ratio of momentum diffusivity to the thermal diffusivity. So therefore, mathematically, it is given as mu Cp by K. So momentum and mass, yes, B is right now. Is B option correct, sir? Is B option correct, sir? Yes, sir. B option is correct. Good. ये वाला लीजिए. Lumped system in heat transfer refers to. Yes, exactly, Mr. Akhil Yadav. अखिल वैभव और अखिल यादव जो भी है. हाँ. लंपड. लंपड में क्या होता है सर? चलिए, माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनो सर. टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड एंड टाइम.
Okay, my dear students, if I assume that the variation of the temperature with respect to space is negligible, now the temperature will be a function of only time. It is varying with time. For example, let us assume that there is an object. ध्यान से सुनो सर, this question can be framed in different way. इस क्वेश्चन को कुछ अलग सा फ्रेम कर सकते हैं सर, क्या है एक बार बताता हूं, सुनो केयरफुली. देखो, let me explain sir. Suppose we have an object. We have an object. As the body is very large, तो the variation of temperature in the body will be large. तो इसीलिए टेम्परेचर इज वेरिंग विथ पोजिशन. ये पोजिशन पे अलग है, 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 as the body is large. So I cannot apply lumped analysis here. But as the body is very small, the temperature variation is very negligible. And suppose it is losing heat. मान लो initially its temperature is 300 degrees centigrade and surroundings are at 30 degrees centigrade. When it loses heat, initially complete body is at 300. It loses heat. After some time, complete body is at 250 degrees centigrade. Again, it loses complete body. So the body's temperature is changing not with position, but it is changing with time. इसको बोलते हैं lumped analysis. So when is that possible? Under two conditions, lumped analysis use कर सकते हैं सर. कब? When the body is smaller in size. The second is when the thermal conductivity of the body is large. When the thermal conductivity is large, if you see, अगर बॉडी का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, सुनो केयरफुली, एक ऐसा है, एक सेकंड आप आंसर दीजिए सर, एक ऐसा है और एक ऐसा है. लेट दिस ग्रीन इज 1, रेड इज 2, दिस इज 3. विच वन हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी? आंसर नहीं आ रहा सर. 1 एग्जैक्टली. लार्जर द थर्मल कंडक्टिविटी, स्मॉलर विल बी द ड्रॉप. अब ये सब यहाँ पे नहीं बताऊंगा सर, एवरीथिंग आई टॉट इन क्लास. सो व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हियर? वेरी नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट सेम लग रहा है सर. सो इसके लिए हम लंप्ड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी टेम्परेचर, इधर भी टेम्परेचर, इधर ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. सो वी कैन अप्लाई लंप्ड एनालिसिस. In order to apply lumped analysis, two things are required. One is the body should be smaller in size. The second is the thermal conductivity of the body must be very large. ठीक है सर? Okay, चलो. What is the answer to this question? Lumped analysis. Heat transfer varying with time and position. No. Heat transfer varying with time but not with position. Yes. Is B option correct, sir? हाँ या ना? हाँ सर, ये ले लो. When do you think the fin is effective? Larger thermal conductivity or smaller thermal conductivity? Answer दीजिए. No one is giving answer. I am waiting for your answers. सुनो sir, if the thermal conductivity of the fin is large, ध्यान से सुनो sir. This is, मान लो, this is the base and this is the fin. What is the purpose of fin, sir? What is the purpose of fin? What is the purpose of fin? The purpose of fin is to transfer heat transfer. To transfer more heat transfer. To transfer more heat. Correct? Correct? Yes. That's why extended surfaces are provided, so that there is the extra surface area. From that extra surface area, more heat is transferred. That is correct. Okay. Now observe here. Look at carefully. अगर मान लो इसका K बहुत ही कम है, मान लो इसका, there are two materials. सुनो सर, this is first material and there is another material and there is second material. This is first material and there is a second material. ठीक है सर, second material. सुनो carefully. सुनो सर, मान लो, look at this temperature is 100. This is, suno, some 99 and this is some 98. This is some 97. This is some 96 and this is some 95
and this is 94. ठीक है, and the surrounding temperatures are 30 degrees centigrade. इधर आइए, this base is 100 degrees centigrade, this temperature is 80, this temperature is 60, this temperature is 40, this temperature is कितना है 35, and this temperature is some 33 degrees centigrade, surroundings are 30. किसमें हीट ट्रांसफर, लेट अस से किसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा सर? इन विच केस द हीट ट्रांसफर इज मोर, केस 1 और केस 2? दिस इज केस 1 एंड केस 2. इन विच केस द ट्रांसफर ऑफ हीट इज मोर? बोलो. केस 1. आर यू श्योर? आर यू श्योर? केस 1 द हीट ट्रांसफर इज मोर. आर यू श्योर? सेकंड. व्हाट इज द आंसर? देखो सर, see, from the fin, heat is transferred to surroundings. Surroundings are 30. Whenever the temperature difference is large, more heat transfer is proportional to the temperature difference. Larger the temperature difference, larger is the heat transfer. See the difference. इसमें कितना है? 99 minus 30, very large. देखो इसमें, but यहाँ पे 60 minus 30 less, 40 minus 30 less, 30. तो इसमें जाते 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 the temperature difference is decreasing. Initially the temperature difference is more. यहाँ पे 80 है तो 30, 50 है, यहाँ पे 30 है, 30, the difference is 30. Temperature decrease होते जा रहा है. So later part of the fin is becoming ineffective, and as the difference between the fin and surrounding is less, it will transfer less heat. As the difference between fin and surroundings is more, it transfers more heat. So I prefer this. What is the difference between this and this? इसका thermal conductivity कम होने के कारण, as the thermal conductivity of this is less, that's why the drop of temperature is more. इसमें drop ज्यादा होने के कारण the temperature drop, देखो इसमें thermal conductivity कम होने के कारण the drop is more. इसमें thermal conductivity ज्यादा होने के कारण, as it is high, the drop is less. So the drop is less. So therefore, as the temperatures maintained are high, so surrounding is less, this is more. The difference is large, it will transfer more heat. So that's why I always prefer fin with high heat, high thermal conductivity. क्या ये बात समझ में आया सर सभी को? And one more thing, fins are effective in which environment? Free convection environment or forced convection environment? Yes, free convection में. Why? Because in free convection, the heat transfer is less. Heat transfer coefficients are less. That's why if I provide fins, they will increase the heat transfer. But in case of forced convection, already the heat transfers are high. So there is no point in keeping fins. That's why fins are more useful under free convection environment. Is it okay, Sarji? Is it okay? Yes. So what is the answer to this? So fin is effective for large value of thermal conductivity. Yes, excellent. I think what is the effectiveness of fin? Root of Kp by Ha. K should be high, H should be low. Correct. Very good. ये करो. Come on, sirs. Come on. Come on. Come on. The ratio of heat flow Q1 by Q2 from two walls of same thickness having their thermal conductivity. देखो, Q is equal to Ka delta T by L. You know this conductive heat transfer. ठीक है सर. एंड मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, थिकनेस हैविंग सेम, देखो सेम थिकनेस, ये भी सेम है. तो कहने से the heat transfer is directly proportional to thermal conductivity. Yes sir. So therefore Q1 by Q2 is equal to K1 by K2. At least you know this equation, sir. At least you know this equation. Yes, if you want I can derive. Okay. Okay. So what is Q1 by Q2? Q1 by Q2 is equal to K1 by K2. What is K1 by K2, sir? K1 by K2 is equal to 2. So the answer is 2. Anyone got this answer? किसी को आया सर? Good.
ये करो, कमॉन कमॉन, अभी पावर प्लांट आएगा, आरएसी पावर प्लांट ये सब आएगा, कमॉन कमॉन, आंसर करो। Fins are provided on heat transfer area to increase the surface area and to promote the heat transfer. Yes, option A is correct. Option A is correct. बहुत बढ़िया सर, A is correct. Come on, 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 come on. बोलो, गोलू, come on. आंसर दीजिए। Yes, yes, yes. I'm back. आ गया सर। Come on, come on. चलिए शुरू करते हैं। So the unit of thermal conductivity is, no one is giving answer. You know, K has, देखो कैसा करेंगे सर, Q is equal to Ka dt by dx. So heat transfer is what? K I don't know. Area is meter square. Temperature difference. ध्यान से सुनिए सर. So whenever it is a temperature difference, केल्विन भी लिख सकते हैं, सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। whenever it is temperature पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस and x change in length it is मीटर, तो ये गया। so therefore थर्मल कंडक्टिविटी के का यूनिट होता है वॉट पर मीटर, इसको केल्विन लिखेंगे, वॉट पर मीटर पर केल्विन, और द सेम कैन आल्सो बी रिटन एज वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों बराबर है सर, because here we don't have temperature, we have difference of temperature. Whenever it is difference in temperature, it doesn't matter whether it is in Kelvin or degree Celsius. तो यहाँ पे सेंटीग्रेड भी लिख सकते, केल्विन भी लिख सकते, तो आंसर क्या है सर? All giving answers, I am so happy. मतलब all serious candidates है, all are giving answers, मतलब बहुत अच्छे students है। What is thermal diffusivity? Thermal diffusivity is nothing but, what is the meaning, sir? It is the ratio of, it is the ability of the medium to transfer or conduct heat to the ability of the medium to store heat. मतलब K by rho specific heat, rho Cp. आंसर क्या है सर? Is B correct? No one is giving answer. जाओ मर जाओ। ये करो, ये करो। Come on, come on. Critical thickness of insulation for sphere. HR by K is equal to 1 for cylinders. HR by K is equal to 2 for spheres, if I am not wrong. So what is R here? It is K by H. What is R here? It is 2K by H. So it will be 2K by H. Can you tell the meaning of critical thickness of insulation, sir? चलो ये तो सब करेंगे। ये what is the meaning of critical, ध्यान से सुनो, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं सर, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, you know my dear students, actually this is the heat transfer. Okay, this is your R and this is the heat transfer. So this is the maximum heat transfer. देखो, whenever this is the critical radius. So what is critical radius? It is such a radius where the heat transfer is maximum. अगर radius critical radius से ज्यादा है तो adding insulation will reduce the heat transfer. अगर critical radius से कम है, if the radius is less than critical radius, adding insulation will increase the heat transfer up to the critical radius. तो आपको क्या करना है? By using this equation, find RC. Whether the adding insulation increases or decreases, you have to check whether R is greater than हमारा जो पाइप का रेडियस है क्रिटिकल से ज्यादा है या कम है, वो देके चेक करना है। इज इट ओके सर? यस एग्जैक्टली, मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये करो।
यस, देखो एक बार, फ्रांसिस टर्बाइन इज यूज फॉर मीडियम हेड्स। एक बार देखो, पेल्टन फ्रांसिस कैप्लान, it is a tangential flow, it is impulse turbine, it is a high head, low discharge, then so जब n root p by h पर जब हेड ज्यादा है तो स्पेसिफिक स्पीड विल बी लो, लो स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है सर। नाउ फ्रांसिस, ये दोनों के बीच में आएगा सर, इट इज एक्शियल फ्लो, it is a reaction turbine, it is a low head, then high discharge, then high specific speed, ये सब मीडियम आएगा। इसमें क्या आएगा सर, इट इज अ मिक्स्ड फ्लो, देन इट इज ऑल्सो अ रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइंस में हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं सर, ओके नो प्रॉब्लम। थर्ड, इट इज मीडियम हेड, then medium discharge, then medium specific speed, ऑलवेज याद रख लेना ये। सो देयरफॉर पूरा पॉइंट्स दे दिया सर, इज इट ओके? ये इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं सर, यस। ये करो, कम ऑन, आंसर चाहिए मुझे, आई वांट आंसर टू दिस। Which of the following dimensionless number is used in surface tension? Surface tension is Weber number, करेक्ट? सही है गलत है? ये देखो एक बार, रेनॉल्ड नंबर विस्कस फोर्स, यूलर नंबर प्रेशर फोर्स, और क्या है, फ्राउड नंबर ग्रेविटी फोर्स, मैक नंबर इलास्टिक फोर्स, एंड वेबर नंबर सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है सर, ओके क्लियर? ठीक है सर, नेक्स्ट थोड़ा फास्ट दे दो सर, आई वांट टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स, थोड़ा फास्ट दे दो आंसर्स। प्रेशर नंबर ही बोला ना, अरे इधर देखो, आपको तो प्रेशर ही बोला ना, देखो यूलर का मतलब प्रेशर ही बोला। अच्छा आप बोल रहे हैं, देखो देखो एक सेकंड, ये मैं क्लास में क्लैरिटी से बोला, some books give it as square root, some books give it as directly, तो एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस में यू नीड रेशियो ऑफ फोर्सेस, तो वेदर यू टेक स्क्वायर रूट और डू नॉट टेक स्क्वायर रूट, आपका तो सेम आंसर आएगा, सेम नंबर का वैल्यू अलग आएगा, लेकिन रेशियो ऑफ फोर्सेस लेने से व्हेन यू गो फॉर डायमेंशनल होमोजेनिटी, ओके। हाँ, ये वाला क्या है, assumption of Bernoulli is valid for along the streamline, incompressible viscous, no, Bernoulli में viscous का कोई assumption नहीं है सर, compressible no, incompressible inviscid correct, isothermal wait, isothermal तो कभी दिया नहीं, वेट करो मैं बताता हूँ, compressible गलत है सर, incompressible, this is the right answer, but now the question comes is sir isothermal का मतलब क्या है, the meaning here is neither the energy is supplied nor the energy is taken out, so that's why he takes it as isothermal। बर्नौली में एक्सटर्नली कोई एनर्जी सप्लाई नहीं होता है और एनर्जी कोई बाहर नहीं लेता है, इज इट ओके, दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग आइसोथर्मल, इज इट ओके सर, इज इट ओके, समझ में आया सर? हाँ जी सर,
ये करो। ओ हो फिगर, फिगर क्या करे, एक सेकंड। लिक्विड फ्लोज डाउनवर्ड्स थ्रू अ टेपर्ड पोर्शन, ठीक है। एट द entrance and exit the pressures are equal. For a vertical head the velocity becomes 4 times. ओके, क्वेश्चन क्या है सर, देखो एक बार क्वेश्चन क्या है। दिस इज द वन, let this be 1 and let this be 2. It is flowing tapered, the liquid flows downwards. Okay. At the entrance and exit pressure are equal. तो P1 P2, यहाँ पे P1 is equal to P2 दिया, और क्या दिया, if for a vertical height of h, this is height h, the velocity becomes 4 times, matlab v2 is becoming 4 times v1. What is the ratio of h2, the velocity, क्या पूछा है सर, the ratio of h2 velocity head at the entrance. At the entrance, what is the velocity head? It is v1 square by 2g. This is asked in the question, correct sir? ये पूछा है सर क्वेश्चन में, ये पूछा है। कैसे करेंगे सर? Whenever you apply Bernoulli's equation, generally we take the lower one as datum. तो इसको Z2 ले लेंगे, इसको Z1 ले लेंगे। Z2 is 0, lower one, and Z1 is height h. अप्लाई करो बर्नौली। P1 by W plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to P2 by W plus V2 square by 2G plus Z2. यहाँ पे losses नहीं है, क्यों नहीं ले रहे सर? Why are you not taking losses? Because it is not mentioned in the question. And one more thing is the pressure at 1 and 2 is same. ठीक है सर। And V1 देखो एक बार, V1 square by 2G यहाँ पे ले लेंगे सर। देखो V1 square by 2G, ठीक है, प्लस Z1, व्हाट इज Z1, H इज इक्वल टू V2, Z2 इज 0, ये तो 0 हो गया सर, Z2 इज 0, Z2 इज 0, तो V2 स्क्वायर बाय 2G, व्हाट इज V2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा सर, 4 स्क्वायर इज 16V1 स्क्वायर, 16V1 स्क्वायर बाय 2G, एंड ही इज आस्किंग, देखो H इज इक्वल टू, ये उधर ले लेना, you take this to that side, it is 16V1 square by 2G minus V1 square by 2G, it will be 15V1 square by 2G. What is asked in the question? H by V1 square by 2G. So H by V1 square by 2G, H by V1 square by 2G, it is equal to 15. The answer is 15. कहाँ है रे क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? Anyone got this answer? Only कौन कौन दिए रे? बहुत बढ़िया, सब लोग दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं आंसर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओनली टू हैव गिवन, पीएस एंड दीक्षा, बाकी के लोगों को क्या हो रहा है रे? कम ऑन कम ऑन, वॉइस का क्लैरिटी है ना सर, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ वॉइस ना? ओके गुड। देखो, फ्लो थ्रू एक्सपैंडिंग ट्यूब at a constant rate, you know, whenever the discharge is constant, it is a steady state, ठीक है, it is a steady state, undoubtedly it is a steady state. Is it a uniform flow or non-uniform flow sir? देखो, A1 V1 is equal to A2 V2. So area is changing, so velocity is also changing. So this section velocity, 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 velocities are different. So therefore it will be non-uniform. So am I right? Therefore it will be non-uniform. Yes. So therefore it is steady non-uniform is the right answer. Is it okay? Steady non-uniform. Suppose, समझ में आ रहा है?
So can I call this as accelerating flow or decelerating flow? बोलिए सर, is it an accelerating flow or decelerating flow? It is a decelerating flow. Why? Because area जब बढ़ रहा है, तो velocity is decreasing. When the velocity is decreasing, you call it as deceleration. Correct? Yes. But ये पूछा नहीं, I am giving. इसका आंसर क्या है सर? नो वन इज गिविंग आंसर टू दिस. ये गलत, मतलब दुख लग रहा है सर. आई एम फीलिंग सैड. कम ऑन, आंसर दीजिए सर. नो वन इज गिविंग सर. बुरा तो लग रहा है. देखिए सर, there is one object, let us say. Imagine this is the buoyancy and this is the gravity. Imagine. Now, let us tilt this. Tilt किए. तो buoyancy से F ऐसा act करेगा, center of gravity से ऐसा act करेगा. अब देखो सर, तो what type of equilibrium is this? देखो, ये ऊपर है, नीचे है. This tries to rotate. देखो, एक सेकंड देखो. So ये buoyancy से ऊपर जाएगा. Buoyancy से is upward force. So weight gravity से, so they are separated. So ये clockwise, मतलब ये वापस आ रहा है, restoring couple. तो ये stable है सर. अब दूसरा situation देखेंगे सर. Let us see another situation. This is the buoyancy. This is the gravity. Gravity से weight act कर रहा है, buoyancy से ऊपर act कर रहा है. अब क्या होगा सर? I tilted like this and again it is moving in the anti-clockwise direction. This is unstable. तो unstable कब होगा? Whenever the buoyancy, center of buoyancy is below the center of gravity. Center of gravity से नीचे होता है, it will be unstable. Is it okay? कहाँ गया रे वो? हाँ. Where is that? Where is that? हाँ. The center of buoyancy is below the center of gravity. This is correct. Is it okay, sirs? बोलो. Yes. Anyone got this answer? नहीं आया. चलो जाओ. ये फटाफट बोलो. Make it fast. Make it fast. When a body is immersed wholly or partially, it is lifted by a force equal to weight of the Archimedes principle. सर ये तो buoyancy principle है. ये भी नहीं आया तो कैसा सर? When a body is either immersed partially or completely, the net vertical upward force exerted by the fluid on the body is known as buoyancy force and that is known as Archimedes principle. ठीक है सर. Good. ये बोलो. Positive pressure gauge. What does it? देखो. This is the atmospheric pressure. This is positive gauge and this is negative gauge. Whenever the pressure is positive gauge, it is above atmospheric. Positive gauge means pressure is oh गलत गलत गलत. कहाँ गए रे? Is it D? Is it D? हाँ जी सर. ये बोलो. The atmospheric pressure in terms of water is 10.3 meter of water. वही अगर मर्क्यूरी में बोलता है तो it will be 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, बिल्कुल सही है सर. सिंपल सा क्वेश्चन है सर. ये ले लो. कम ऑन कम ऑन. And next class I am starting for SOM, on SOM for ISRO. The stress strain relationship for Newtonian fluid. This is strain rate, that is du by dy or d theta by theta.
dt, it is strain rate and it is shear stress, and it is linear, sir. For a Newtonian fluid, it is linear. Correct? Correct or wrong? Is this okay? नहीं आ रहा है रे आपको. Shall we proceed? Okay. It is linear. बिल्कुल सही है सर. ये करो. The purpose of supercharging is, anyone? The purpose of supercharging is to increase the power output. How can I increase the power output? देखो, the indicated power is given by PMLA N K by 60 or 120, depending on the engine, whether it is two-stroke or four-stroke. So यहाँ पे हम मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ाएंगे. हाउ? बाय अलाउिंग द चार्ज टू एंटर एट हाई प्रेशर. तो ये अगर पीएम बढ़ाएंगे तो इंडिकेटेड पावर बढ़ेगा. सो सुपर चार्जिंग इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन. इज इट ओके? यस, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. ये करो. नेक्स्ट. हाँ, ये 90th क्वेश्चन. कम ऑन, कम ऑन. देखो, इसका आंसर कौन देंगे सर? 90th का. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. 90th का कौन देंगे सर? बी केयरफुल सर. The exhaust gas, the composition of dry gases. Actually, this is what does the composition of dry exhaust gas. मतलब एग्जॉस्ट गैस में क्या क्या दिख रहा है सर आपको? देखते हैं सर. एनीवन आंसर? कैन एनीवन आंसर? इन द एग्जॉस्ट गैसेस क्या क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है. ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है. क्या मतलब है सर? सो मेरे प्यारे दोस्तों, whenever there is extra oxygen coming, इसका मतलब we are using excess air. excess air यूज करने के कारण, ध्यान से सुनो, my fuel is generally hydrocarbon. So oxygen is used for combustion of hydrogen. Oxygen is used for the combustion of carbon. So apart from this, अगर correct, chemically correct use करते हैं, if you use chemically correct, that oxygen is sufficient for burning hydrogen, oxygen is sufficient for burning carbon dioxide. No oxygen will come out from the exhaust gases. But यहाँ पे already oxygen is 9.6% in the exhaust gases. Means I am using extra air. Extra air. Where from that extra oxygen आ रहा है? का मतलब extra air use किए. Is it clear? नहीं आ रहा सर समझ में आपको? अरे यार, whenever you see in the exhaust में extra oxygen, oxygen आ रहा है, इसका मतलब I have used extra oxygen and some oxygen. Suppose, ध्यान से सुनो, suppose I don't use extra oxygen, I use only chemically correct, so no oxygen will come out, no oxygen will come out. So this extra oxygen is showing, excess air used. Very good. और एक बात, instead of carbon monoxide, अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो मतलब there is insufficient oxygen. That's why carbon is burning to carbon monoxide, not to carbon dioxide. तो अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो बोलो insufficient oxygen. ठीक? Is it okay sir? Is this clear? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर. Whenever there is extra oxygen, it means excess air is used. So excess air is used. That extra air contains oxygen. So extra air is used. So extra oxygen without burning, मतलब whatever the, for example, इसको हाइड्रोजन को कार्बन को whatever oxygen is required for burning, that is sufficient. But as you are using extra oxygen, that will come out as it is. Okay, समझ में आया सर क्वेश्चन? Clear? Clear? Very good. ये ले लो. Come on, come on. In order to prevent knocking in SI engines,
The charge away from the spark, it should have a low density, it should have low temperature, and it should have longer ignition delay. All the above, all are correct. All the above, all the above. फिर से बता रहा हूं, आपको चाहिए? नो 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 नो। अरे यार, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है एंड चार्ज में, चार्ज अवे फ्रॉम, इफ द टेम्परेचर, देखो डेंसिटी लो है तो इट विल टेक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं बताता हूं। आई विल एक्सप्लेन दिस सर, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। टू प्रिवेंट नॉकिंग इन एसआई इंजन, तो द चार्ज अवे फ्रॉम द स्पार्क प्लग से जो दूर होता है, इट शुड नॉट हैव हाई डेंसिटी। अगर हाई डेंसिटी होता है तो इजीली मिक्स होके वो बर्न हो सकता है। सेकंड, टेम्परेचर अगर हाई होता है, इट विल रीच सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एंड बर्न इजीली। नेक्स्ट क्या बोला है? एंड लॉन्गर, अगर इग्निशन डिले कम होता है, इट टेक्स लेस टाइम फॉर प्रिपेयरिंग एंड नियर बाय व्हेन द स्पार्क से जो फ्लेम आ रहा है उससे पहले ही वो बर्न हो जाएगा। तो एंड में जो द चार्ज है ना स्पार्क प्लस से जो दूर है, इट शुड हैव लो इग्निशन डिले, मतलब it should take more time for preparing. By the time spark will come and burn it. So yeah, all the answers are correct. So it should, to avoid knocking, low density चाहिए, so low temperature चाहिए। अगर उसका temperature ज्यादा है, it will reach self ignition temperature easily and it burns. Before the spark is reached, it burns. That is very dangerous. So actually in SI engines, the combustion should take place with the help of spark. So अगर उधर का density ज्यादा है तो easily mix up होके burn हो जाएगा, which is not, that is knocking not required. And अगर उसका temperature ज्यादा है, it will burn before the flame could reach, it will reach self ignition easily. And अगर उसका delay कम है तो it will easily overcome, मतलब लेस टाइम में वो बर्न हो जाएगा बिफोर द चार्ज इज कमिंग। तो फ्लेम आने तक वेट करने के लिए इसका डिले ज्यादा होना चाहिए, इसका डेंसिटी कम होना चाहिए और उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये करो। Come on. During idling, what does idling mean? No load, almost zero load, low speed. तो एक्चुअली क्या होता है ना, हम बाइक्स में देखें, इधर देखो थ्रॉटल ऐसा ओपन कर रहे हैं, तो थ्रॉटलिंग में, आइडलिंग में, द वॉल्व इज ऑलमोस्ट क्लोज, थ्रॉटल वॉल्व। तो क्या होगा सर, जब ऑलमोस्ट क्लोज होता है, थ्रॉटलिंग के कारण प्रेशर ड्रॉप होके बैक फ्लो होता है सर। अब ये सब डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन आईसी इंजन कोर्स। तो ब्लैक फ्लो होके गैस हमारा फ्रेश चार्ज डाइल्यूट होता है। तो जब डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि ना देखो अब अगर हम एक्सेल सॉरी थ्रॉटल को ओपन कर रहे हैं, जब थ्रॉटल आइडलिंग का मतलब थ्रॉटल ऑलमोस्ट क्लोज पोजीशन पे होता है, सो उसके कारण रेस्ट्रिक्टेड फ्लो के कारण प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप के कारण रिवर्स फ्लो होता है। तो जब चार्ज, मेरा एक्चुअल चार्ज एग्जॉस्ट गैसेस से डाइल्यूट होता है तो कंबशन चांसेस कम है। टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबशन, रिच मिक्सचर शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग आइडलिंग। आइडलिंग में रिच मिक्सचर चाहिए सर, इज इट ओके? आइडलिंग में रिच मिक्सचर चाहिए। ऑल दिस आई हैड एक्सप्लेन्ड इन माय आईसी इंजन सर। आइडलिंग में यू नीड वेरी रिच मिक्सचर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आइडलिंग में आपको वेरी रिच मिक्सचर चाहिए सर, इज इट ओके? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? चलो एक्सप्लेन करता हूं सर, चलो आपको चाहिए तो एक्सप्लेन करता हूं, इधर देखो। एक्चुअली होता क्या है सर, देखो, लुक एट ऑल, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द फ्रेश चार्ज, फ्रेश चार्ज, एयर प्लस फ्यूल जो सिलेंडर के अंदर आ रहा है, ठीक है? लुक एट केयरफुली नाउ, आइडली दिस इज द एग्जॉस्ट वाल्व एंड दिस इज द इनलेट वाल्व। तो एक्चुअली होता क्या है, पिस्टन अब ऑलरेडी कंबशन हो, ध्यान से सुनो सर, लेट मी एक्सप्लेन सो दैट आपको याद रहेगा। सो अब देखो, इट इज ऑलमोस्ट क्लोज है, अब ये क्लोज है सर, ये वाल्व क्लोज है। ध्यान से सुनो, अब द पिस्टन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये वाल्व ओपन होगा, द एग्जॉस्ट गैस आर गोइंग आउट टू एटमॉस्फेयर। सो देखो मुझे बताओ सर, हाउ कैन दीज गैसेस मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड? डेफिनेटली अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर का कम होना चाहिए, देन ओनली हाई टू लो। आफ्टर बर्निंग, कंबशन पूरा होने के बाद, आफ्टर कंप्लीट कंबशन, एग्जॉस्ट हो रहा है सर, आई रिपीट सर, कंबशन हो गया,
पावर डेवलप होगा। अब गैसेस को रिमूव कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर से गैस आर रिमूव्ड, सो व्हेन गैसेस आर रिमूव्ड, inside pressure should be more, outside pressure should be less. So definitely atmospheric pressure, let us say 1 bar ले लेंगे या फिर 1.01 bar ले लेंगे. What should be the pressure here? It should be more than that. It is greater than atmospheric pressure, greater than atmospheric pressure, atmospheric, greater than PATM. Then only the exhaust gases will go. And you know very well, अब सक्शन शुरू हो रहा है. आइडलिंग केस में क्या होता है सर? ये ऑलमोस्ट क्लोज्ड पोजीशन पे होता है सर, ऑलमोस्ट क्लोज्ड पोजीशन पे होता है सर. वेरी गुड सर. जब ऑलमोस्ट क्लोज्ड पोजीशन पे होता है, आइडलिंग का मतलब वी डोंट ओपन द वॉल कंप्लीटली, ऑलमोस्ट क्लोज्ड पोजीशन पे होता है सर. तब क्या होगा? एंड वी हैव स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द पार्शियली ओपन वॉल्व. पार्शियली ओपन मतलब नॉट कंप्लीटली, पार्शियली. सो यहाँ पे थ्रॉटलिंग के कारण, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड फ्लो के कारण, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण यहाँ का प्रेशर ड्रॉप होगा. जब प्रेशर ड्रॉप होगा, फ्रेश चार्ज ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का ज्यादा है, तो क्या होगा? हाई प्रेशर वाला, ये पूरे बर्न्ट गैसेस है सर, दिस बर्न्ट गैसेस स्टार्ट इन मूविंग इन द बैक फ्लो होगा. जब बैक फ्लो होगा, ये मेरा फ्रेश चार्ज पूरा डाइल्यूट हो जाएगा, इट गेट्स डाइल्यूटेड. तो डाइल्यूट जब होगा बर्न चार्ज जैसे, कंबशन प्रॉपर नहीं होगा. टू इंप्रूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबशन, रिच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आइडलिंग. अभी समझ में आया सर आप? नो. यस, वेरी गुड. ये करो. What is the function of carburetor? The function of carburetor is to mix air and fuel and atomize the fuel. What do you mean by atomize? फाइन पार्टिकल वेपर फॉर्म में ये फंक्शन होता है सर. एयर फ्यूल को प्रॉपरली मिक्स करके एटोमाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एटोमाइजेशन? स्प्रे कर लेते हैं ना, स्प्रे में फाइन ड्रॉपलेट्स की तरह आता है. दैट इज द पर्पस ऑफ कार्बोरेटर. सो कहांगे रिफाइन द फ्यूल? नो. इंक्रीज द प्रेशर? नो. इंजेक्ट पेट्रोल? नो. Atomize and vaporize the fuel and to mix it with air, proper ratio. Exactly correct sir. Okay sir, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ये करो. इन केस ऑफ डीजल इंजन, इंक्रीजिंग कट ऑफ रेशियो. क्या होगा अगर कट ऑफ रेशियो बढ़ाते हैं डीजल साइकिल में? एफिशिएंसी वर्सेस कट ऑफ रेशियो. इफ द कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज, एफिशिएंसी, इफ द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग, एफिशिएंसी विल डिक्रीज. बात क्लियर है सर? बात क्लियर है? सो हाँ, लेकिन वो नहीं पूछा सर. ओ गॉड, पूछा तो वो नहीं सर जी. क्वेश्चन कमाल का है, कमाल का है सर क्वेश्चन. देखो डीजल साइकिल ड्रॉ करो. सो हियर वॉल्यूम, हियर प्रेशर. इज दिस करेक्ट सर? Is this correct, sir? Yes. What is cutoff ratio? Volume after heat addition to the volume before heat addition. So heat supply is taking place here. This is our heat supply. So what is the cutoff ratio with it? And please note down that this is the maximum volume and this is the minimum volume. This is the swept volume V1 minus V2. ठीक है sir. What is mean effective pressure? Mean effective pressure is equal to net work by swept volume. Now he is increasing the cutoff ratio. अब cutoff ratio बढ़ा रहा है सर. कैसे बढ़ाएंगे सर? How can I increase the cutoff ratio? देखो, now instead of stopping the supply of heat here, और थोड़ा heat supply करो. Yes. मुझे बताइए सर, if I am increasing the, now what is the old cutoff ratio? Old cutoff ratio V3 by V2. New cutoff ratio V3 dash by V2. I repeat, old cutoff ratio V3 by V2. New cutoff ratio V3 dash by V2. अब cutoff ratio बढ़ा रहा है. What is happening? Are you changing the maximum and minimum volume? Are you changing maximum? देखो इसमें भी maximum volume same है, minimum volume same है. तो swept volume is not changing. What is changing, sir? Closed area is increasing. Original closed area is only this much. Now again this fresh closed area ये बढ़ रहा है sir. So network is increasing. With increase in cutoff ratio, the network is increasing. So when the network is increasing, the mean effective pressure is also increasing. लेकिन और एक बात है, so mean effective pressure increases will increase mean effective pressure. मेरे प्यारे बच्चों,
ये मत बोलना मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है, गलत। विथ इंक्रीज इन मीन इफेक्टिव प्रेशर नेटवर्क बढ़ेगा, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ना जरूरी नहीं है, बिकॉज एफिशिएंसी विल डिपेंड नॉट ओनली ऑन द नेटवर्क बट ऑल्सो ऑन द हीट सप्लाई। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? इज इट ओके? सो ध्यान से सुनिएगा सर। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज ऑफ कट ऑफ रेशियो? Mean effective pressure increases, network increases, swept volume remains constant and efficiency decreases. ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये करो। Come on, come on, come on. In a two-stroke, अच्छा two-stroke. In two-stroke engine, the cycle, suction, compression, power and exhaust. The cycle is completed in how many revolutions? In two-stroke engine, the cycle is completed in one revolution. अगर फोर स्ट्रोक है तो फोर रेवोल्यूशन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर। इज इट ओके? इन टू स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सो वन रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट में दे विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, हाँ ये बोलो। ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं रे। कम ऑन कम ऑन। व्हाट इज द आंसर सर? The efficiency of diesel cycle depends on not only compression ratio but also on the cutoff ratio. The compression ratio and cutoff. B is the right answer. So what is the equation sir? एक बार लिखता हूं. The efficiency of a diesel cycle is 1 minus 1 by R power, where R is compression ratio, power cutoff ratio minus 1 by gamma into RC minus 1. Is it correct? But अगर आपको ऑटो साइकिल का चाहिए, it will be 1 minus 1 by R power gamma minus 1. So the Otto cycle efficiency depends on the compression ratio, but the diesel cycle efficiency depends on the compression ratio and cutoff ratio. Okay, right. Come on. For the same compression ratio, the thermal efficiency, whenever the compression ratio is same, Otto cycle is efficient. Already I have taught you so many times, so many times. Whenever the compression ratio is same, Otto cycle is efficient. बताया था, derive करके भी बताया था. Yes, Otto cycle is more efficient. The efficiency of Otto cycle is more. Is it correct? For the same compression ratio, Otto cycle is efficient. बहुत बढ़िया सर. ये लीजिए. Come on, come on. Just give me 1 minute. I'm back. Just 1 minute दीजिए सर. Just 1 minute दीजिए. I'm back.
चलिए आ गए. Come on, come on. Okay. Now, when outside air is introduced for ventilation purpose, देखो outside air, definitely outside inside there is a temperature difference. Whenever there is a yes or no sir, outside inside there is a temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो सेंसिबल हीट आएगा. बट आउटसाइड एयर इनसाइड एयर मॉइस्चर का डिफरेंस होता है सर. सो इट ऑल्सो ब्रिंग्स मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स लेटेंट हीट. तो आउटसाइड एयर इज द कैरियर ऑफ बोथ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, क्योंकि आउटसाइड एयर में मॉइस्चर भी आ जाता है. सो मॉइस्चर का मतलब लेटेंट हीट, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब सेंसिबल हीट. तो आउटसाइड एयर, वेंटिलेशन एयर इंट्रोड्यूस बोथ सेंसिबल एंड लेटेंट हीट. क्या ये समझ में आया सर? नहीं आ रहा है सर आपको? बच्चे हैया गए सर? अरे यार मैं बताता हूं, सुनो एक सेकंड, एक सेकंड. ये रूम है. रूम में ध्यान से सुनो. यहां पे मान लो, यहां पे प्लीज ऑब्जर्व, कुछ लीक है सर, तो एयर अंदर आ रहा है. अंदर रूम के अंदर आप 25 डिग्री मेंटेन कर रहे हैं, बाहर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये डिफरेंस के कारण देयर इज अ टेंपरेचर डिफरेंस, सो डेफिनेटली इट विल ऐड टू सेंसिबल हीट. व्हेन एयर इज कमिंग, वो मॉइस्चर के साथ भी आएगा ना सर. क्या एयर ड्राई हो क्या आएगा आपके लिए? मैं ड्राई हूं, मैं मॉइस्चर निकाल के आता, ऐसा बोलता है? मॉइस्चर भी आएगा. व्हेनेवर देयर इज अ मॉइस्चर इट इज अ लेटेंट हीट. तो वेंटिलेशन एयर मतलब आउटसाइड एयर has two components, sensible heat and latent heat. Is it clear? क्लियर नहीं हुआ? चीज चिप्स कौन है रही है? चेस चिप्स. चेस चिप्स यार, चीज चिप्स पता नहीं कौन है ये. चलो लास्ट में कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, आगे क्या करना है. ठीक है, ये ले लो. ड्यूरिंग एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ मॉइस्चर, इधर देखो, दिस इज दी, यहां पे क्या रहेगा सर? भूल गए, देखो ओमेगा और पार्शियल ब्रेक. यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बिल्कुल सही है सर. देखो ड्यूरिंग एडियाबैटिक कूलिंग, देखो ये एडियाबैटिक है सर. Adiabatic process follows constant enthalpy or constant Whitball temperature length. This is not only adiabatic. यहाँ पे not only the enthalpy is constant, but Whitball temperature is also constant. तो adiabatic process will follow constant Whitball temperature length. ये सारे मैं क्लास में बताया था, याद है सर? Just chips. सब भूल गए देखो, सब भूल गए देखो, मतलब सब गलत गलत आंसर दे रहे हैं. ठीक है, ओके. Now, vertical and uniformly spaced lines on psychrometric chart. इधर देखो रे, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री. देखो vertical, vertical, vertical. What are these lines? Dry bulb temperature, dry bulb temperature, dry bulb temperature. Dry bulb temperature is constant and equal spacing, equal spacing. So vertical, these lines represent क्या है sir? Represent what? Dry bulb temperature lines. Is it correct sir? ये भी नहीं आ रहा है आपको, मैं क्या करूं अल्लाह. ये बोलो. Sensible heat factor is the ratio of sensible heat to the total heat. और इसको लिख सकते हैं हम sensible heat by total heat is sensible heat plus latent heat. कहां गए रे वो? Sensible heat factor is the ratio of sensible heat and latent heat. गलत. Latent heat गलत. Sensible heat yes. So option is C. Is it correct? Just chips. Just chips. चिप्स खाते बैठते हैं, ये करो. दी वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो. ध्यान से सुनिएगा. वेट बल्ब डिप्रेशन इज नथिंग बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर. सो व्हेन इज द वेट बल्ब डिप्रेशन जीरो सर? ये वैल्यू जीरो बोला है. वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो, इसका मतलब ड्राई बल्ब इज इक्वल टू वेट बल्ब. When do you expect dry bulb is equal to wet bulb? When air is saturated. When air is saturated, dry bulb is wet bulb. So when air is saturated, the relative humidity will be 100% or 1. So when the air is saturated, not only for saturated air, for saturated air,
ड्राई बल्ब इज इक्वल टू वेट बल्ब इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बहुत बढ़िया सर। इज इट ओके सर जी? इज इट ओके सर जी? यस सर जी। फटाफट। In vapor absorption, sorry. In vapor absorption system, the heat is rejected in vapor compression, where is heat rejected? Condenser में. लेकिन vapor absorption में, not only in condenser the heat is rejected, in absorber also heat is rejected, because when the absorbent is absorbed in refrigerant, therefore heat is rejected. Heat is rejected in absorber also. In vapor absorption, the heat is rejected not only in absorber but also in condenser. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ हाँ, जनरेटर में क्या सर आप बे सर, डी इज द राइट आंसर। इज इट ओके? जस्ट चिप्स, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर, कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर इज करेक्ट। हीट इज रिजेक्टेड बोला है वो। समझ में आया सर? आरएसी में ये सब पढ़ाया था, भूल गए आप लोग। हाँ, freon leaks are detected by halide torch. Freon leaks are detected by halide torch. And ammonia leaks are detected by sulfur stick method. Ammonia leaks in presence, समझ में आ रहा है सर? White fumes of ammonium sulfate are formed. देखो यहाँ पे freon leaks are detected by halide torch method. So इसमें whenever there is a leakage of freon, the color of the light changes from blue to bluish green. Whenever color changes from blue to bluish green, it is the presence of freon. So halide torch method use करते हैं। अमोनिया के लिए सल्फर स्टिक मेथड, फॉर अमोनिया सल्फर स्टिक, and freon's halide torch method. Freon पूछा है सर, it is halide torch method. Is it okay? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये करो। The chemical formula of R12, CCl2F2 is R12. कहाँ गए हो? यस यस यस, इसका मैं रीजन भी बताया, हाउ टू राइट ऑल दोस थिंग्स। हाँ बोलो। In window air conditioner, the expansion device, throttling device, capillary tube. Domestic refrigerator, window air conditioner में the expansion device that we use is a capillary tube. It is a capillary tube है? Yes, 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 बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। Is it okay? बहुत बढ़िया सर, ये करो। आंसर दीजिए सर, देखते हैं। आंसर दीजिए, देखते हैं सर। In vapor compression cycle, a good refrigerant should have large enthalpy of vaporization at the evaporator. क्योंकि देखो ऐसे कंप्रेशन, देन ये थ्रॉटलिंग, so this is the enthalpy of vaporization. This is also known as refrigeration effect. So अगर ये ज्यादा है तो more amount of heat will be absorbed with a little mass. Less mass will absorb more amount of heat. So it should have large enthalpy of vaporization at the evaporator pressure. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। 73rd B, large vaporization at the evaporator. ये evaporator में large heat तो स्टोरेज से बहुत ज्यादा हीट लेगा, less mass will take more heat. समझ में आ गया? यस, ये बोलो। करो फटाफट करो। द फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू वेपर कंप्रेशन साइकिल। देखो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, बोलो। द एंथैल्पी एट द कंप्रेसर इनलेट, दिस इज कंप्रेसर इनलेट, हाउ मच इज गिवन सर? 1200. द एंथैल्पी एट द कंप्रेसर आउटलेट, द एंथैल्पी एट द कंडेंसर आउटलेट, कंडेंसर इनलेट, कंडेंसर आउटलेट, what is the COP? Can we write, this is throttling, ये throttling है, can we write throttling में enthalpy constant होता है H3 is H4, so H3 is H4, it is 200. So what is the equation for the COP? It is the refrigeration effect, that is H1 minus H4 by work input. So refrigeration effect is H1 minus H4 by work input is H2 minus H1.
ठीक है सर जी. So therefore COP is given by H1. What is H1 sir? 1200. And what is H4 sir? H4 is 200 divided by H2 minus H1, that is 1400 minus H1 is 1200. तो कितना होगा सर ये? I think denominator numerator is 1000 ना? Is it 1000? Yes. And the denominator is 200. Answer is 5. Is it 5? Is it 5? Correct, correct, correct. ये करो. 1 ton refrigeration means 1 ton refrigeration is actually amount of heat that is removed from 1 ton of water at 0 degrees centigrade in order to convert it into ice at ice in 24 hours. Hi sir. 1 ton refrigerant, no. Mass of machine, no. 1 ton of ice melts in, yes. B is the right answer. ये 24 hours is very important. 24 hours is very, very important. बिल्कुल बढ़िया सर. Come on, come on, come on. A refrigerating machine having a COP2 is used to remove heat. Okay. And COP is equal to refrigeration capacity by power input. So what is the COP given to? And it is used to remove 1200 kilojoule per minute. So the capacity is 1200 kilojoule per minute. And he is asking power input. So therefore, the power input is equal to 1200 by 2. Look at the unit, kilojoule per minute. ठीक है सर जी. So can I write the power input as 600 kilojoule per minute? ठीक है सर. So power input is equal to 600 kilojoule and minute means 60 second. So therefore power input is equal to, ये कितना होगा सर? 10 kilojoule per second is kilowatt. So answer is D correct? Is D correct? Yes sir, yes sir, yes sir. A gas turbine with a large number of stages during compression leads to Ericsson cycle. मैं तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सर, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सर, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सर. Gas turbine with large number of compression and expansion leads to Ericsson cycle. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर. This is very very important sir. This is very very important sir. Gas turbine works on Brayton or Joule cycle. Gas turbine works on Brayton cycle. ठीक है सर. In gas turbine regenerator, the regeneration is nothing but using internal heat so that the heat supply will decrease. So when the heat supply is decreasing, we are not changing compressor and expansion works. So network is will remain same, but the heat input is decreasing, so efficiency will increase. So always remember the efficiency will increase. The purpose of a regenerator is to increase the efficiency. Is it okay? ठीक है ना सर? तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूं सर. एंड अभी थोड़े क्वेश्चंस हैं, तो इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस क्वेश्चंस विद यू. लेकिन आपका रिस्पांस उतना ठीक नहीं है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आपको पढ़ाना भी बेकार है. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक लगा क्लास? ठीक लगा रे क्लास? नहीं लगा? कोई कमेंट ही नहीं कर रहे. ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो आप ऐसा करो सर, मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, आपको चाहिए तो आई आई हैव द पीडीएफ ऑफ दिस, आई विल शेयर. सो टेंशन मत लेना, अच्छा प्रिपेयर कर लेना सर. प्लीज डोंट टेक एनी टेंशन, अच्छा प्रिपेयर कर लेना. फुल्ली जाके एग्जाम लिख के आ जाना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. ओके, सो ऑल द बेस्ट. आई एम स्टॉपिंग क्लास. ओके, बाय बाय.